BIOSS. I am Subhranshankar Singh and you are watching online Botany. Last class we discussion करुथिले about biodiversity, why biodiversity is so important to us and how come biodiversity is so very precious for the earth and how it is being dispersed all above the globe. Then we discussion kale how to conserve biodiversity and ame शिखिबा चाहिए जे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रे हम इंडिया रो कोन रोल अछि एंड हाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड 18 डिफरेंट बायोस्फीयर्स. नाउ बायोडाइवर्सिटी भीतर हमें ई जो जीव जंतु गछ पतंग लता कीट पतंग सब देखिले एंड बारंबार मु कहली जे देयर आर 1.8 मिलियन स्पीसीज. एक्चुअली मु जो 1.8 मिलियन कहूची दिस इज अबाउट द डॉक्यूमेंटेड स्पीसीज अर्थात एमाने सेई जातिर जीव जंतु कीट पतंग बा अणुजीव जो माननको आमे आइडेंटिफाई करि पारिचे एवं सेमानकर आइडेंटिफिकेशन को एस्टैब्लिश करि पारिचे. किंतु एमाननको छाड़ी देले आहुरी एमिति अनेक जीव जंतु गछ पतंग से सब अछंती जहा को आमे एपर्यंत प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई मध्य करि पारि नाहे. दे आर समथिंग 10 times of the identified ones जहाँ हमें आइडेंटिफाई करि पारिचे तार पाखा पाखी 10 गुण जहाँ को वर्तमान पर्यंत हमें आइडेंटिफाई मध्य करि पारि नाही जे से माने प्रकृत रे कोन से माने भिन्न ना से माने यार गोटा अंश. नाउ हमें ए जो जीव जंतु बा जो बायोडाइवर्सिटी कथा कहूचे हमें यार आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश केमिति करू. हाउ कम आई नो that something belongs to some place, something belongs to some category, something belongs to some specific genus or specific species. How we differentiate that, how we establish that. धरिनिया जाऊ मु कहिबी जे tell me something about Lord Rama. जदि मु एटा कहिबी ताहले आमे आरंभ करिबा कोन ना आमे आरंभ करिबा दशरथ अयोध्या बोली गोटे राज्य थिला. सेठी दशरथ बोली जने रानी राजा थिले तांकर तिनी रानी थिले. तांकर बड़ रानी का ना कौशल्या तांकर गोटे पुआ हला तांकर ना राम से जनकଙ୍କ कन्या से तांको बाहा हेले इत्यादि 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 हमें कहि कहि छिबा. सो व्हेन आई से राम आमे तांको केमिति आइडेंटिफाई करले अयोध्या प्लेस फादर दशरथ मदर कौशल्या बाहले सीतांकर फादर हेले जनक. सो दिस इज हाउ वी एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन. आम पाखु चिट्ठी आसुची वी गेट लेटर्स इज नॉट इट. आम पाखु चिट्ठी आसुची सो चिट्ठी कौन लिखा है टू शुभ्रांशुशेखर सिंह एट दिस प्लेस पोस्ट दिस प्लेस डिस्ट्रिक्ट दिस प्लेस स्टेट दिस प्लेस लिखा है. दैट इज माय आइडेंटिटी. दैट इज हाउ इट कम टू मी. आमे कहबे आजिकली तो पिला माने आउ वर्तमान चिट्ठी सहित एते एक्वेंटेड नथि पिला मेल सहित एक्वेंटेड. सर आम पाको मेल आछ ओके हाउ कम ए मेल कम्स टू यू ओनली. हाउ कम तमे जीमेल गोटे अकाउंट खोलिल नै कि एंड सेठी कि तम पाखु को पठा जाउथो मेल आसिला. नाउ जस्ट थिंक ऑफ हाउ कम ए मेल सेंड फ्रॉम अमेरिका come to your account only not to somebody else. नेट से रास्ता खोजिला केमती पाइला केमती. सो यू हैव ए आइडेंटिटी. तमर जो अकाउंट क्रिएट हैला दैट अकाउंट इज बीइंग स्पेसिफाइड टू यू ओनली सो दैट द मेल दैट इज बीन ओरिजिनेटेड समवेयर एल्स इन द ग्लोब रीच टू यू. इज नॉट इट. कांसेप्ट इज क्लियर. ठीक सेमिति आमे जते बेले जीव जगत को विश्लेषण करिया पई जाउचे सेमानक विषय जानिबा पई जाउचे सेमानकर आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करिया पई जाउचे. जते बेले आमे आंबो आउ चंपा गछ भितर डिफरेंशिएट करिया पई जाउचे जते बेले आमे आंबो आउ लेंबू को अलग करिया पई जाउचे जते बेले आमे गाय आउ छेली को अलग करिया पई जाउचे सेते बेले आमे सेमानको कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली तांकर एक्जेक्ट प्लेस रे लोकेट करिया पई अछि. That study of allotment of a particular species, a particular place, ताको आमे साइंटिफिकली आम बटनी भाषा रे कहू taxonomy. To identify
to distinguish and to name an object is called taxonomy. Is not it? So, aji ame पढ़िबा से taxonomy and ता सहित आमे डिस्कशन करिबा systematics. यार सेकंड पार्ट रे आमे आउ गोटे जिंस भी कवर करिबा binomial nomenclature. तेबे आजर क्लास को डिटेल को जिबा पूर्वरो रिक्वेस्ट करिबी, if you are new to the channel, please do subscribe the channel. और जदि ए लेक्चर भल लगे ताहले प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो आमे कौन कहले, आमे प्रथमे कहले टैक्सोनॉमी. सो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी रे आमे टैक्सोनॉमी को डिफाइन कले, इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी क्लासिफाई, फर्स्टली वी आइडेंटिफाई एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, then we place it at a particular place, we classify it. So identification, naming and classification, ये तीनटा जाक को आमे कहूचे taxonomy. Identification, nomenclature and classification. Identification, nomenclature and classification. याको underline कर दबा. Okay, so taxonomy रे आमे जतल ताको identify करले, and do you know ताको identify करिबा এবং দুইটা very similar, very relatively close species को परस्पर ठार डिफरेंशिएट करिवार जो बेसिक फॉर्मल आउ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस डेवलप हैला, सेटा कोन पे हैला धरि निया जाऊ. आई विल गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई विल आस्क यू, नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग समथिंग, यू गेस इट. एंड व्हाट आई एम डिस्क्राइबिंग, आई एम सेइंग she is a pet animal. She is basically white, black or brown in color. She has 4 legs. She gives milk to us. We call her as our mother. तमे कौन गेस करिबो? Cow. You will say cow. गाय. हिंदी रे गाय. तमिल, तेलुगु, मलयालम अलग अलग भाषा रे ताको अलग अलग ना रे आमे कहूचे. आम भारत भितरे we are using so many languages. So worldwide ताको अलग अलग जगह रे अलग अलग ना रे कहा जाता है. So even if we identify something, we are not able to place it in a particular place if we are not conformed with its nomenclature. We are not abiding to a specific nomenclature. So ये जो identification, nomenclature आउ classification जहाँ को हमें taxonomy बोली कहिले, a man called Carolus Linnaeus, a Swedish botanist, आज टू 300 वर्ष तले, in the year 1700. So at that period of time, this Carolus Linnaeus, he formatted this study of taxonomy, जो थिरे से गोटे बेसिक फॉर्मेट डेवलप कले, जो जहाँ द्वारा आमे गोटे ऑब्जेक्ट को, गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करिबा, ताकू गोटे ना दबा, नोमेनक्लेचर करिबा तार, एवं ताकू क्लासिफाई करिबा, ताकू कोठी रहिबो ताकू हमें रखिबा. Now some year later there is another scientist, Epidecondol. Now what Epidecondol says, Epidecondol गोटे फॉर्मेट डेवलप कले जो थिरे आमे एक्जाक्टली सिमिलर कैरेक्टर थिबा स्पीसीज को गोटे जीनस भितरे बा गोटे सिमिलर कैरेक्टर थिबा जीनस को गोटे ऑर्डर बा क्लास बा किंगडम भितरे एस्टैब्लिश करी पारुछे. So he coined the word systematics. Here taxonomy and systematics. Now what is systematics? अच्छा पिला आउ गोटे एग्जांपल देखिबा कोन, जो पिला माने मैट्रिक पास कले, सब पिला मैट्रिक पास कले. Now those who have qualified metric, they can get admitted to +2. Is not it? किछि तो confusion नहीं. Now all of them जो माने +2 एडमिशन नेबे, फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया कोन हला ना से माने मैट्रिक पास करथिबे. So there is a similarity between them. What is the similarity? से माने समस्त मैट्रिक पास करी थिबे. But now there is 3 different stream, 3 different branch. कोन? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. किछि पिला जो माने मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी
এই লাইନରେ ଯିବେ ସେମାନେ ସାଇନ୍ସକୁ ପ୍ରିଫର କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ କଲଚର ଲିଟରେଚର ଏଇ ଲାଇନରେ ଯିବେ ସେମାନେ ଆର୍ଟ୍ସକୁ ପ୍ରିଫର କଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିବେ ଫାଇନାନ୍ସ ପଢ଼ିବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ କମର୍ସକୁ ପ୍ରିଫର କଲେ। ସୋ ନାଓ ଦେयर ଇଜ ଏ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ। ସିମିଲାରିଟି ସମସ୍ତେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ, differentiation କିଛି ପିଲା ସାଇନ୍ସକୁ ଗଲେ, କିଛି କମର୍ସକୁ ଗଲେ, କିଛି ଆର୍ଟ୍ସକୁ ଗଲେ। So there is a systematic order depending their similarity and dissimilarity ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। That is known as systematics. Now here ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲି ବାବା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ। This Carolus Linnaeus, this man ଆଜିଠୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସର ଉଦ୍ଭବ ଆଉ ବିକାଶ ଏତେ ବି ହେଇନଥିଲା, this man goes on various expeditions, ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପେଡିସନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲା ଭିତରେ he himself identified some 4,400 species himself। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପବ୍ଲିଶ କଲେ ଯାହାର କେତେ ଗୁଡ଼େ ଏଡିସନ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଟାଇମରେ ହିଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଦ ବୁକ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରେ। जो बुक अनुसारे दिस टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर डेवलप है। मु नोमेनक्लेचर बारंबार कहूँ कारण यार नेक्स्ट पार्ट में नोमेनक्लेचर को टच करबा। सो ताकू से एस्टाब्लिश कले। सो दिस कैरोलस लिनायस दिस पर्सन इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सो ये जो टैक्सोनॉमी आ सिस्टमैटिक जहाँ कहूँ बर्तमान आम ये गोटे तो मैंने बोर्ड को भल भाव देखो। ओके, that is a simple example. So this taxonomy जो taxonomy कहा गला study of taxa is taxonomy। taxa माने कौन? सीढ़ी देखो लैडर जो प्रतिटी प्लेट थाए जहाँ पे पाद देखिए हमें चढ़ू, that is known as taxa। that is known as taxa। स्तर भिन्न भिन्न कैटेगरी भिन्न भिन्न कैडर, that is known as taxa। so एठी कौन हैला फर्स्ट लाइफ फॉर्मेट। नाउ लाइफ रो नेक्स्ट जो ताको हमें डिवीजन कले दैट इज किंगडम। नाउ देयर आर सेवरल किंगडम्स जहाँ को हमें लाइफ फॉर्मेट भितर आनुची, जेमती प्लांट किंगडम जेमती एनिमल किंगडम। एठी तमे एपटे देखि परतो लिखा है एनिमलिया, एपटे लिखा है प्लांटेर। नाउ सेवरल फाइलम्स दैट कंबाइन टू फॉर्म ए किंगडम, several phylum that combine to form a kingdom। classes several same classes of same characters they combine to form a phylum। several order combine to form class, several family combine to form order, several genus combine to form family, and multiple species of same genetic characters, of same morphological characters, of same functional behavior, they form a genus। okay, now ये गोटे लैडर भाई देखा गला नहीं कि। अच्छा एठी आमे जो एग्जांपल नेले कोन नेले ना किंगडम कहिले प्लांटिया, एठी कहिले एनिमल। फाइलम एठी नेले गोटे नेले एंजियोस्पर्म, एपटे आमे लिखिले कडाटा। क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, एठी आसिला मैमेलिया। ऑर्डर सापिंडेल्स, एठी आसिला प्राइमेट्स। फैमिली आनाकार्डियेसी, एठी आसिला होमोनिडाए। जीनस एठी आसिला मैंजिफेरा, एठी आसिला होमो। स्पीसीज एठी आसिला इंडिका, एठी आसिला सापियंस। तमे कहबो एटा कोन हैला? व्हाट डज ऑल दीस थिंग्स? पिला माने एतक न कही जदि मु एठी सिंपली कहिबी मैन एवं एठी मु कहिबी मैन रे लागिला गो मैंगो मनीष आंब। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक भितरे जेतेबेले आमे आमको निजको आइडेंटिफाई करू वी आर द ह्यूमन बीइंग, सेतेबेले आमे कहू वी द ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया, phylum Chordata, class Mammalia, order Primates, family Hominidae, genus Homo, species Sapiens। Whereas amo
इंग्लिश रे हमको मैन कहउछि ना सो आम भली सुना जाउथवा आउ गोटे शब्द मैंगो को जते बेले हमें आइडेंटिफाई करछे सेते बेले हमें मैंगो को कोठी पाउछे किंगडम प्लांटेया फाइलम एंजियोस्पर्म क्लास मैग्नोलेप्सिडा ऑर्डर सापिंडेल्स फैमिली अनाकार्डियेसी जीनस मैंजिफेरा एवं स्पीसीज इंडिका मैन मैंगो गोटे गछ गोटे जीव उद्भिद प्राणी टैक्सोनॉमिकली हमें एस्टाब्लिश कले where we belongs to. So this is all about taxonomy and systematics. Now we will go to binomial nomenclature. एटा कोन हम या पूर्व nomenclature कहि चलथिल ना. Now we will go to that. Okay. So आमे डिस्कशन करूथिले binomial nomenclature विषय ना आमे nomenclature विषय कथा होथिले ना कि so the exact term is binomial nomenclature. Binomial nomenclature. Now, what is nomenclature actually? Nomenclature means namakarana, giving a name to a object, to a person. Why we name a person? हमें पृथ्वी रे 600 कोटी रु अधिक लोक वर्तमान भारत रे 130 कोटी 130 crores 130 crores individual people have an individual name. So why a name? What is the importance of name? Why a name is being given? Name is to establish the identity. जन को चिन्हिबार जन को आइडेंटिफाई करिबार सबुठु इजीएस्ट तरीका हैला ताको गोटे ना दबा धरी निया जाऊ मु एठी गोटे एग्जांपल देली धरी निया जाऊ मु कहिबी Subhranshu Ranasi. Now, take another example. Naveen Patnaik. Take a third example. Narendra Modi. One more. Ramnath Kovind. So, 4 names on the board. When I say Subhranshu Ranasi, it is me standing in front of you. When I say Naveen Patnaik, you immediately understand he is the Honorable Chief Minister of Orissa. When I say Narendra Modi, you understand that he is the Honorable Prime Minister of India. When I say Ramnath Kovind, you understand that he is the Honorable President of India. 4 names, simple names, but they have their own identity. So naming a person is very essential. Tenu janma pore बापा माँ आमको जीवन सहित आउ गोटे बड़ जिनस देइथांती सेटा आम ना आम आइडेंटिटी आम परिचय दैट नेम इज सो इम्पोर्टेंट आमे जीवन जाक सदा बेले आमे से ना को कैरी करी चलू एंड सदा बेले कहे टीचर्स कहती पेरेंट्स कहती जीवन रे एमती किछि करबनी तम ना खराब हबो सो नेम कैरीज योर वैल्यू Name carries your identity. So जेमिति आमे प्रति इंडिविजुअल को ना दौचे सेमिति आमे प्रति स्पीसीज को जहाँ बायोडाइवर्सिटी भितर आमे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट करी सारिचे आइडेंटिफाई करी सारिचे से प्रति स्पीसीज को आमे गोटे ना दो so that we can easily identify them जेमति मु टैक्सोनॉमी पढ़िला बेले कोन कहिली जे गोटे चतुष्पद प्राणी व्हाइट ब्लैक और ब्राउन हेइथिबो पेट एनिमल से मिल्क दिए एवं आमे ता मिल्क पिउबा एवं ताकु मां बोली कहू आमे इमीडिएटली कहिले काओ बा गाई सो द वर्ड गाई और काओ इट्स अ नेम गिवन टू दैट पर्टिकुलर एनिमल छेली गिवन a name to that particular animal जहार मांस आमे खाई जाऊ बर गछ अस्वस्थ गछ both are gigantic in size जदि दीटा जाक पत्र छड़ा दे जाइथिबे ताहले होय त बहुत कष्ट हो जन जाक आइडेंटिफाई करबा बट जेतले पत्र थिबा आमे जहार
पत्रर अग्रभागटा गोजिया होकर लंबी जाइथिबो ताको हम इजिली आइडेंटिफाई करबा एटा अस्वस्थ गछ आरटा बर गछ इज नॉट इट सो बर एंड अस्वस्थ बोथ आर ट्रीज बट बोथ आर नॉट द सेम so giving a name is very important so understand what is nomenclature naming or giving a name is nomenclature now binomial what is binomial what is bi means two mono 1 bi 2 tri 3 quadra 4 tetra 5 hexa 6 is not it so bi means two nomial means name bi means two nomial means name and nomenclature means naming so binomial nomenclature means two name naming two name naming what is two name naming कौन पे आमे तो कहले गाई आमे कहले छेली आमे कहले बर गछ आमे कहले अस्वस्थ गछ किंतु जेतले आमे बॉटनी को पळे आसले जेतले आमे टैक्सोनॉमी को पळे आसले जेतले आमे सिस्टमैटिक को पळे आसले कौन पे आमे टू नेम नेमिंग को यूज करू छे छोटिया एग्जांपल देबी but it is not two name naming but it is how it has been developed why it has been there मु एठी जो चारिटा जाक ना लिखिले पिला बने सुब्रांशु रण सिंह नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी रामनाथ कोविंद जदि चारिटा जाक ना को तमे देखिबो ये चारिटा जाक ना each name is of by parts सब नार दुईटा पार्ट अछि the first part रामनाथ नरेंद्र मोदी नवीन शुभ्रांशु all of them are given name whereas Govind, Modi, Patnaik or Ran Singh they are the surname now what is given name what is surname now this surname is actually the name of your family जो वंश जो कुटुंब को तमे बिलोंग करूच दे यूज दिस पर्टिकुलर नेम दिस पर्टिकुलर वर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग generation after generation and all the family members bear that name so when आमे जेंति कोनोसी गांव को गले आमे कहबा आमे कहउछ ना पटनायक बाबू को घर now the entire village knows which home is belongs to the Patnaiks. So here this surname, be it Kovind, be it Modi, be it Patnaik or be it Ran Singh, this surname belongs to the family whereas Ramnath, Narendra, Naveen or Shubhranshu they belongs to a particular person of that family. जेमिति आमे एठी ह्यूमन बीइंग फेस रे ए फॉर्मेट को यूज करूना बाबा माने this is so very important that same system is used in binomial nomenclature format and Honorable Carlos Linnaeus he is also known as father of binomial nomenclature he designed this method why he designed this method the main factor is there are so many close species which are very hard to differentiate by a single digit name, by a single word name. Like, मु पूर्ण एग्जांपल जो दउथली तार गोटे पार्ट को फेरिया पे चाहिए एठी हमें लिखले मैन मैन मींस हियर इट इज ह्यूमन ओके सो ह्यूमन आउ मैंगो लाइक मनीष आउ आंबो आमे जते बेले मनीष ह्यूमन कहबा साइंटिफिकली आमे ह्यूमन को कहबा होमो सैपियंस साइंटिफिकली आमे ह्यूमन को कहबा होमो सैपियंस मैंगो को कहबा मैंजिफेरा इंडिका एठी प्रश्न उठिला जे होमो सैपियंस काहे की मैंजिफेरा इंडिका काहे why only not homo why only not mangifera or why not only sapiens why not only indica the reason is when we say homo the
entire species where the genetic combination reflects the value of Homo will come under Homo. But all of them are not sapiens. There is Homo erecta and some other species. But fortunately enough, world रे Homo genus under रे केवल बर्तमान गोटिए स्पीसीज अछि sapiens. माने आम गुण लक्षणधारी कौनसी जीव पृथ्वी आउ नाहांती आमे एका अछि मनीष भली आउ के नाहांती किंतु जेतेबेले आमे मैंजिफेरा इंडिका केस को आसुचे आंब केस को जेतेबेले आमे आसिले मैंगो कथा कहिले सेतेबेले मैंजिफेरा जीनस अंडर रे there are so many other species other than indica. So ei jo indica na diya gala, this name is typically for the variety of mango only. No other species is included in this name. So जेतेबेले हमें binomial nomenclature कथा कहिले Carolus Linnaeus propose कले two name naming format एथिपई so that we can use the genus name and species name to identify a living organism to very much specificity. That is the importance of binomial nomenclature. Now binomial nomenclature basic जहाँ format थिला that is से निजे जहाँ आरंभ करथिले सिस्टम नेचर अनुसार ताको ही से फॉर्मेट को ही आमे आज पर्यंत एस्टाब्लिश करी चलचे आज पर्यंत ताको फॉलो करी चलचे कारण ताठू आ बेटर फॉर्मेट किछि आमे आज पर्यंत पाई ना बट ताको यूज करिवार मध्य किछि फॉर्मेट्स अछि आमे कोनोसी ना को इटसेल्फ गोटे ना बोली देई परिबा नाही. नाउ यू वॉच दिस गोटे छोट फोटो देखा जाउची गोटे फोटो देखा गला ना ये जो फोटो टे प्ले देखिलो ये फोटोटा कौन ना दिस इज साइकास नया गढ़ेंसिस अढ़ंग कहली ए अढ़ंग गछटा सब जगह देखा जाए बट एबे जो फोटोटा तमे देखिबो पिला माने ए फोटो रे जो अढ़ंग गछ देखा जाउची बा जाको साइकास बोली हमें कहूचे दिस वेराइटी इज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ ओडिशा. जेहेतु ए स्पेसिमेन टा को हमें नयागढ़ आइडेंटिफाई करा गला तेणु या ना साइकास नयागढ़ेंसिस बोली से माने को नोमेनक्लेचर कले एंड दिस नोमेनक्लेचर is basically on the principles that is laid down by Carolus Linnaeus. So ये जो ना हमें दबा बा दिया गला ये जो अढ़ंग गछ को से अढ़ंग गछर चित्रटा एबे त माने भल भाबे देखो. सो देखिला त पिला माने एबे ए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कथा हम डिस्कशन करूचे हाउ दिस नेम इज बीइंग गिवन यार किछि बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस अछि ता विषय में किछि जानिबा. सो फर्स्ट थिंग इज तमे माने जते बेले होमो सापियंस बा मांजिफेरा इंडिका कथा मु लेखितिली मु एठी पुणी आउथरे लेखुची सो मैंजिफेरा इंडिका मु एठी लेखिली ये जो लेखिली नाटा याको टिके भलो भाबरे देखो मु बारंबार सेठी भी जते बेले लेखिथिली होमो सापियंस लेखिथिली मैंजिफेरा इंडिका लेखिथिली मु अंडरलाइन करथिली एठी भी जते बेले मु लेखिछु मु अंडरलाइन करिछि. सो द प्राइमरी रूल सेज दैट दिस नेम शुड बी रिटन इन italic. If not in italic, then rule number 2 says that they should be underlined. They should be underlined. The first name should be the name of the genus Mangifera, name of the genus, and the second name should be name of the species, should be the name of the species. The genus name should start with a capital letter
The genus name should start with a capital letter. Genus name should start with a capital letter, whereas the species name should start with a small letter. Start with a small letter. Rule number 7 says they should be of a maximum of 12 letter length, not more than that. Any name should not be lengthier than that. Next, what is it says that no name or no species should have two different names. That means each individual species should have a single name only. The name should be accepted by ICN. ଆଗରୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ICBN, ICZN, International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature. ଏବେ ତାକୁ ଟୋଟାଲି କୁହାଯାଉଛି International Code of Nomenclature. International Code of Nomenclature गोटे ना सेतेबेले ना बोली आमे कन्फर्म करिबा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हिसाब रे जेतेबेले ताको इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर एक्सेप्ट करिबो. So these are certain basic rules, regulations जोटा को फॉर्मेट करी कि हां यादर आहुरी गोटे भी जिंस अछि पिला माने that this name or the description or whatever we are doing to establish the identity of that particular species should be as per the 10th edition of Systema Naturae of Carolus Linnaeus. And to be very specific, this names, this binomial nomenclature is always followed by a symbol of LINN dot. So when I am writing Mangifera indica, the complete name should be Mangifera indica Linnaeus, as per the system of Linnaeus. So this is all about systematic, taxonomy and binomial nomenclature. आशा करछि आजर क्लास भल लागिथिबो. If you like the class, do press the like button and share it with your friends. Thank you. Have a good day.